apply as much as you can, because मतलब अगर कंपनीज बहुत अच्छा फिल्टर लगा रही हैं, दे आर ओनली चूजिंग 1%, तो तुम 1000 में अप्लाई करोगे तो कहीं तो तुम 1% में आओगे। अब पहले अप्लाई करो एंड देन फिल्टर आउट कि तुम्हें क्या क्या, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज उनमें से तुम्हारे पास आई हैं। आई थिंक दिस थिंग रियली वर्क्स। जब मैंने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी भी अपनी जब मैं फाइंड कर रहा था, मैंने तब भी ये किया था, मतलब श्योर। Without any further ado, let's get started with Ujjwal's interview. Over to you, Ujjwal. थोड़ा आपके बारे में बता दो. Yeah, sure. So I started my bachelor's journey with a university in Delhi, in IB University, and then after that I started working for Infosys. I worked there for about 1 year, and then I did a small startup with a friend of mine. I tried to. We were building applications for different startups, different companies, and it went on for a little. But then, for some reason, we couldn't continue. So I decided to just go abroad. Do my masters, learn more, and then gain some more knowledge in computer science and programming in general, because my bachelor's was actually in electronics. So yeah, I went to US. I studied computer science from New York University, and then I did 2 internships at New York University. And then immediately after my graduation, uh, I was interviewing for multiple companies. I've interviewed for Amazon, Microsoft, Google, and other big companies. I had multiple offers, but then I decided to go with Microsoft. I continued my journey with Microsoft for about 3 years. I was primarily developing Windows applications, focused on Windows App SDK, whatever the newest SDKs were coming on Windows, and then developing front end or full stack applications on top of Windows. Yeah, and then I never wanted to settle in US, so it was decided that I had to come back. So I was at the end of about 3 years. I started applying for jobs back in India, but then I knew like a lot of companies were hiring remote. Yeah, so I basically just applied for a lot of remote opportunities, and Mhm. yeah, I landed on a good opportunity. So I just went with it. Uh, yeah, Amazing. So, yeah. in today's video, we only going to talk about your transition from a product-based company, a big MNC, to a remote job. Mhm, We'll talk about all the pros and cons, or what are the difficulties you might have faced, और switch करने में कितना problem हुआ, क्या क्या चीजें, what resources you used, or maybe what was your strategy. So everything in and out हम लोग उसके बारे में discuss कर रहे होंगे इस video के अंदर. So the first question is, as you mentioned कि आप remote opportunities में apply कर रहे थे, तो mhm. how you actually started, like what would be the step by step process for someone who wants to get into remote jobs, if someone is working in maybe in a service based company or in a product based Mhm. company, no matter, but शुरू कैसे करे. ओके, ठीक है। तो शुरू करने के लिए बेसिकली मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बिकॉज मेरे पास एक प्रोफाइल थी जो कि मुझे लगता था कि मेरे लिए इनफ है टू स्टार्ट अप्लाइंग, और मुझे लगता था कि मेरी प्रोफाइल से, फॉर एग्जांपल आई हैड माइक्रोसॉफ्ट इन दैट माय रिज्यूमे, मेरे पास मास्टर्स डिग्री थी। तो मैंने ज्यादा प्रोजेक्ट्स और ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड ऑल नहीं दिखाया अपने रिज्यूमे में। बट देन आई जस्ट स्टार्टेड टू अप्लाई। मैं डायरेक्टली अप्लाई किया लिंक्डइन पे, एंड देन दीज अदर पोर्टल्स, एंड मेरे पास कुछ रेफरल्स थे फ्रॉम सम फ्रेंड्स। आई It didn't help me a lot, but हाँ, मैंने हेल्प ली थी in some other companies, but क्योंकि मैं रिमोट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा था ज़्यादा, तो आई मोस्टली ओनली स्टिक टू लिंक्डइन इन माय ओन जर्नी। एंड लिंक्डइन पे एक फिल्टर होता है व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, तो एक फिल्टर होता है दैट यू जस्ट टिक एंड सेज रिमोट ओनली। तो मैं वो बस रिमोट ओनली वाला टिक करके आई अप्लाइड एज मेनी एज पॉसिबल, बिकॉज मुझे था कि अपॉर्चुनिटी कैसी है वो, मतलब आई विल फाइंड आउट लेटर। बट देन मैंने उसमें भी एक फिल्टर लगाया था कि मुझे मिनिमम लाइक
दिस इज द मिनिमम पैकेज दैट आई वांट एंड दिस इज द रेंज आई वांट, जब भी वो लोग रेंज पूछते थे, सो दैट मैं फिल्टर आउट कर पाऊँ जो कंपनीज मुझे नहीं चाहिए. And then I just went like crazy applying like 10-20 applications a day. I think this thing really works. जब मैंने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी भी अपनी जब मैं फाइंड कर रहा था, मैंने तब भी ये किया था. मतलब अगर तुम्हें ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी चाहिए, इवन इफ यू आर अ फ्रेशर और इवन इफ यू आर एन एक्सपर्ट, तो लाइक दिस थिंग रियली वर्क्स. अगर तुम्हारे पास और कुछ ऑप्शन नहीं है, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ रेफरल्स, अप्लाई एज मच एज यू कैन. बिकॉज कंपनीज अगर मतलब अगर कंपनीज बहुत अच्छा फिल्टर लगा रही हैं, दे आर ओनली चूजिंग 1%, तो तुम थाउजेंड में अप्लाई करोगे तो कहीं तो तुम 1% में आओगे. सो आई थिंक समथिंग दैट दैट हैज ऑलवेज वर्क फॉर मी, माय फ्रेंड्स, कि तुम अब पहले अप्लाई करो एंड देन फिल्टर आउट कि तुम्हें क्या क्या कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज उनमें से तुम्हारे पास आई हैं. और आई वाज इंटरव्यूइंग अ लॉट जब भी मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही थी. ओके. पर्सनली मैं स्टार्टअप्स और स्टार्टअप्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा था rather than big companies because that's just something I want to do. मुझे स्टार्टअप्स पे काम करने में, इन टू एंड प्रोडक्ट पे काम करने में ज़्यादा मजा आता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है. तो उज्जवल, जैसे आप रीच आउट कैसे करते थे लिंक्डइन पे? आप जैसे अप्लाई तो एक पार्ट हो गया, आप मे बी आप स्टार्टअप के रिक्रूटर्स को भी रीच आउट करते थे रिमोट जॉब्स के लिए, या फिर सिर्फ आप जॉब्स टैब पे ही कंज्यूम करते थे? नहीं, मैंने रीच आउट भी करा. मैं काफ़ी रिक्रूटर्स को डायरेक्टली रीच आउट करता था जिनके अवेलेबल था, जिनकी प्रोफाइल्स अवेलेबल थी, ओपन थी, या फिर जिनको मैं रीच आउट कर सकता था. तो हम्म. उसके थ्रू भी मेरे पास काफी अच्छे इंटरव्यूज आए हैं. सम ऑफ देम डिडंट वर्क आउट या फिर कुछ भी हुआ, बट या लाइक जस्ट मैसेजिंग देम, लाइक ओल्ड मैसेजिंग देम समटाइम्स वर्क्स. ओके. और if you have a direct connection, that's the best part. But अगर नहीं है तो just try to reach out, try to uh, ask, and if you have some good profile, a lot of them will reply back. गॉट इट. तो उज्जवल, जैसे एक स्टूडेंट जो कि रिमोट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, जैसे कि फिल्टर हम्म. होता है सैलरी का, और हम्म. स्किल्स तो चलो एक जगह हो गया, बट सैलरी में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो डॉलर्स में होती है. तो व्हाट शुड बी द आइडियल सैलरी जो कि फ्रेशर को लुकआउट करनी चाहिए? बिकॉज जितना ज्यादा सैलरी रेंज बढ़ाते हैं उतनी अपॉर्चुनिटीज कम होती जाती हैं. तो एक Right, फ्रेशर right. को कितना देखना चाहिए सैलरी रेंज? I'm not sure कि वहाँ पे सिर्फ डॉलर्स में अमाउंट आता है. आई थिंक अगर तुम लोकेशन डाल रहे हो तो इट चेंजेस. आई थिंक लिंक्डइन पे इवन रुपीज यू कैन पुट दैट फिल्टर. एंड देन जो हायर कर रहा होता है, दे आर हायरिंग इन यूएस. सो रिमोट में देयर इज दिस थिंग दैट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट हायरिंग वर्ल्ड वाइड. मतलब जो रिमोट अपॉर्चुनिटीज हैं वो रिमोट इन इंडिया है, या फिर रिमोट इन यूएस है, या फिर रिमोट इन स्पेसिफिक लोकेशन है. वो ऐसे नहीं है कि रिमोट वर्ल्ड वाइड रिमोट हायर कर रहे हैं, दैट एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन वर्क. वो स्पेसिफिक लोकेशंस में हायर करते हैं, देन थ्रू दे स्पेसिफिक सब्सिडरीज. सो अगर वो रिमोट इंडिया में हायर कर रहे हैं तो वो उनके पास एक इंडिया की सब्सिडरी होगी, एंड देन थ्रू दैट दे हायर. तो दे हैव अ रूपी फिल्टर मोस्ट ऑफ द गॉट टाइम. इट. मैंने कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शंस में भी देखा है, दे हैव अ रूपी फिल्टर. हाँ, अगर फ्रेशर है एंड इफ ही हैज गुड एक्सपीरियंस, अच्छी प्रोफाइल है, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, गिटहब है, मतलब डेफिनेटली like apply for, like go for higher end packages, like even like 20 plus 15 plus is not like 20 plus is good. Just go for 20 plus packages even if you are a fresher and you think you have a good profile and you think you have good internships and everything in your way. So I think you can easily target 20 plus. तो अभी आप रिमोट जॉब करना शुरू हो गए हो, तो जॉब लिए कितना डिफरेंस है एक एमएनसी में ऑफिस में जाके काम करने में टू अ रिमोट जॉब जो कि आप अभी कर रहे हो? मतलब आपको क्या क्या अच्छी चीजें लगी और क्या क्या बुरा लगा? व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स यू फाउंड? So to be honest, मैंने माइक्रोसॉफ्ट में भी रिमोट जॉब किया है, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था तो दैट वाज कोविड टाइम. तो रिमोट स्टार्ट किया था. मैंने माइक्रोसॉफ्ट में रिमोट भी किया है, इन ऑफिस भी किया है. आई थिंक मतलब रिमोट का द बिगेस्ट बेनिफिट इज फ्लेक्सिबिलिटी, कि तुम
like apart from the meetings nobody is continuously keeping a check on you, तो तुम अपने हिसाब से काम कर सकते हो जब तुम्हें सही लगे, like whatever task you have you can plan it in your own way, जब करना है जैसे करना है तुम अपने हिसाब से कर सकते हो. You don't have to wake up at a specific time every day, इतने बजे उठ के ऑफिस जाना है. And then I think especially in India एक बहुत बड़ा commute होता है, like if I'm for example if I'm going from New Delhi to Gurgaon, that is Yeah, 1.5 hour commute और बहुत सारे लोग करते हैं यहाँ पे. right. और personally to me like that like takes half a day away from me, क्योंकि वो 1.5 hour one way 2 hours the way back, that's very tiring. Exactly. और Yeah. या सो मतलब आई थिंक वो मेरे लिए तो सबसे बड़ा फैक्टर वही था कि मुझे वो नहीं करना था, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू गो फॉर अ रिमोट पोजीशन. बट Mm-hmm. ऑन द अदर हैंड ऑफिस में जाके जब मैंने एमएनसी में फॉर एग्जांपल मैंने माइक्रोसॉफ्ट में भी इन ऑफिस काम किया है, बिफोर इन्फोसिस में मैंने इन ऑफिस काम किया है. द गुड थिंग इज कि तुम एक्चुअली में टीम से मिलते हो, तुम टीममेट्स के साथ बैठते हो, you like hang out with them. So just hanging out with them helps you a lot. क्योंकि uh, you know once you become friends with somebody, it's easy to ask questions. It's easy to take mentorship from them. Anything like anything that you do Mm-hmm. at work, बहुत easy हो जाता है. So that's definitely a plus. मतलब अगर कोई just कोई एकदम बस स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी प्रोग्रामिंग जर्नी और दे वांट टू लर्न एज मच एज दे कैन, तो आई वुड सजेस्ट इफ यू कैन, इफ देयर इज अ ऑफिस नियर बाय, या फिर अगर तुम जा सकते हो एटलीस्ट गो Mm-hmm. once twice a week to Understood. to be able to get that uh, in you, and to be able to talk to Mm-hmm. people, understand all of Correct. this. तो जैसे कि आप यूएस में काम कर रहे थे और नाउ यू आर बैक इन इंडिया, तो आपको क्या लगता है कंपैरेटिवली आप कहाँ पे ग्रो ज्यादा कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ योर वेल्थ, कंसिडरिंग कि वहां पे भी आप एक बहुत अच्छी एमएनसी में ही काम कर रहे थे वेर यू वर एक्चुअली इन अमंग द टॉप पीपल, टॉप अर्नर्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया. तो अब जबकि इंडिया में आ गए हो लेकिन आपकी जो इनकम रहेगी वो डॉलर्स में रहेगी, राइट? तो Mhm. आपको what do you think, like how more you will be able to save now? सो फर्स्टली लाइक मैं क्लियर कर देता हूँ कि मेरी सैलरी डॉलर्स में नहीं है, सैलरी Okay. रुपीज में है. बिकॉज Mm-hmm. एज ए सेड कि 95% जो रिमोट जॉब्स हैं इंडिया में भी, Mm-hmm. दैट इज दे आर थ्रू एन इंडियन सब्सिडरी. तो उन Indian कंपनीज subsidiary. में सब्सिडरी होती है उसके थ्रू वो करते हैं. इट इज गुड, मतलब इट्स मतलब इट इज कंपेरेबल, नॉट एज कंपेरेबल डेफिनेटली जितनी यूएस में होती है उतनी तो नहीं है फॉर श्योर, बट इट इज स्टिल गुड. और इट इज इन रुपीज, बट या फॉर श्योर आई थिंक इंडिया में लाइक इफ आई कंपेयर द परचेजिंग पावर पैरिटी एंड Mm-hmm. my expenses everything, like definitely I think इंडिया में ग्रो करने का ज्यादा चांस है. इंडिया में फॉर श्योर लाइक अदर देन सैलरी, इंडिया में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, एवरीथिंग इज मोर. बट या अदर देन दैट, इवन इफ आई जस्ट कंपेयर द सैलरी, Yes. like comparing how much I paid in rent there, like comparing how much I paid in like other things, just living, groceries, everything. Like compared to that, India, mein, it's very cheap. Everything is very cheap. So, uh, yeah, I might end up saving more. तो जब आप यूएस में काम कर रहे थे ऑब्वियसली यूएस के टैक्स लॉज आप पे अप्लाई हो रहे थे, और इंडिया में काम कर रहे हो सिंस आपने बताया आपकी जो सब्सिडरी से हायर हुए हो आप, जिससे वो इंडियन लॉज ही Mhm. अप्लाई होंगे आपके टैक्सेस के. बट फॉर अ पर्सन Um, हु इज वर्किंग फॉर अ रिमोट जॉब जिसकी जो कंपनी यूएस में ही है फॉर एग्जांपल, तो उस पे mhm, कौन से टैक्स लॉज अप्लाई अप्लाई होता है और कितना टैक्स देना पड़ता है रिमोट जॉब्स में कंपेयर टू नॉर्मल एमएनसी? mhm. ओके, तो सो आई थिंक अगेन जो यूएस में काम कर रहा है उसको यूएस लॉज के हिसाब से यूएस गवर्नमेंट को टैक्स देने पड़ेंगे. हम्म. एंड दैट डिपेंड्स ऑन वो कौन सी टैक्स स्लैब में आता है, उसकी कंपनी कौन सी स्टेट में रजिस्टर्ड है. हम्म. फॉर एग्जांपल लाइक ईच स्टेट इन यूएस हैज अ डिफरेंट टैक्स अपार्ट फ्रॉम द फेडरल टैक्स. तो फेडरल टैक्स यूएस में सबके लिए कॉमन होता है, और वो भी टैक्स स्लैब्स होते हैं उसके अंदर अलग अलग, जैसे इंडिया में होते हैं. और
उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है तो डेफिनेटली उसका मच हायर होगा टैक्स स्लैब, लाइक इवन 35-40% तक भी लोग टैक्स देते हैं. और आई थिंक सेम विद इंडिया, लाइक as soon as you go above 50 lakhs in India, like तुम्हारे 30% के ऊपर then again 10% extra tax लगता है uh, on whatever income above 50 lakhs, on whatever income tax you above 50 lakhs, उस पे 10% और लगता है. So I think equivalent tax होगा if you are earning in that higher range. Got it. So any particular website that you used while applying to remote job except for LinkedIn? जैसे आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा बuzz है, remotive.co हो गया, ये remotely हो गया, तो आपने इन वेबसाइट्स को यूज किया है? अगर किया है तो what is your feedback कि how effective they are? पर्सनली मैंने नहीं किया, I'll be honest. मैंने सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन पे फोकस किया था. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ देम आर इफेक्टिव, क्योंकि मैंने देखी है उनके इंटरफेसेस, मैंने उनकी जॉब्स देखी हैं, एंड a lot of companies are posting their jobs in multiple portals. तो मैंने बहुत सारी jobs जो LinkedIn पे देखी हैं वही, for example, we work remotely है and these other websites. तो वहाँ पर भी देखी हैं, तो I'm sure कि they are good portals to apply. और जैसे लिंक्डइन पे अगर हमें रिमोट जॉब्स देखनी है तो हाउ शुड वी मॉडिफाई आवर लिंक्डइन प्रोफाइल? So I think LinkedIn पे update as many things as you can. Your experience, your projects, your open source contributions, सब कुछ important है. Experience के अंदर job descriptions, uh, everything. And then I think one very important thing is your title on LinkedIn. So आपका title should reflect what you're looking for. क्योंकि बहुत सारे recruiters जब reach out करते हैं आपको, for example, if you are not applying but you're just waiting for recruiters to reach out, तो जब वो search करते हैं then they search for specific keywords like Java developer, .NET developer. So अगर आपके ये सारे keywords आपके LinkedIn के title में होंगे तो it helps them reach out to you. And also when they are, for example, जब हम easy apply के through apply करते हैं LinkedIn पे, when they are going through your profiles, so it's very easy for them to see, for example, if they are looking for a back-end developer, but they'll just filter you out if your profile says front-end developer. So yeah, so I think that also helps. Okay, final question. What are the trending technologies one should learn to get into remote jobs very quickly? I think सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसके अंदर जा सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर you're going in data engineering, data analytics, go for Python, like data science or machine learning in सबके लिए, like you're learning Python and all that stack with Python. But अगर software development में job ढूंढ रहे हो तो I would say like definitely web apps, front-end web applications is very hot. Native web applications is also good, but front-end web apps is very hot. उसके अंदर if you know HTML, CSS, JavaScript, React, that is a good front-end stack. Back-end में like a lot of companies are asking for Java, JavaScript, Node.js, TypeScript, and then Python, C#. Correct. Yeah, I think So yeah, there are a lot more languages. So Go developers की आपको बहुत openings दिखेंगी. फिर front end में like other than web आपको Flutter application developers की बहुत openings दिखेंगी. Android developers की बहुत openings दिखेंगी. So I think it's not कि तुम्हें बस कुछ specific set of technologies सीख के ही you get chances, but all across the tech stack you can grow in all these different branches. Understood. Great talking to you, Ujjwal. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. I hope जितने भी देख रहे हो उन्हें जो कुछ डाउट्स थे उनके वो सॉल्व हुए होंगे. अगर नहीं हुए तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, और आप उज्जवल से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं. उनके सोशल हैंडल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. Thanks a lot, Ujjwal. Meet you in the next video. Till then, bye. Take care.